Definitely, you will find in your syllabus one paper. Is it audible to each and everyone? Hello? Yes, yes. Yes, Message. voice is coming. Okay, okay, okay. So, in particularly what happened in a PG process, we definitely find out whatever might be the stream. Mostly, they have designed a paper, research methodology, or something like that nomenclature. Okay, so in that, why at all they have designed it? Definitely, they have shown intention that from the previous stage, the universities want that research inclusivity skill should be developed. And right now in NEP 2020, they included it from the very beginning, let's say from the UG courses also somehow, but not in that stringent way, which is inserted in the PG courses. So we can say that research and research methodology is an inevitable things in our curriculum. Whatever might be the curriculum might be a academic curriculum, or might be when you are engaged in some kind of any profession, might be teaching, might be any other job for your livelihood. Directly or indirectly, somehow you use those skill and technology, consciously or subconsciously. So in short, you can say that's why I have said that research and its methodology is an inevitable thing for us. Like death is certain, and taxes is certain, and retirement is certain for all of us. Similarly, the research and its method, how to do those research, is also an integral part of our life. Otherwise, we cannot grow and survive in a dynamic society. Okay, so maybe you are not in an academician, but somewhere else also, you cannot avoid the research and research methodology. So, can you, any one of you has just say what do you mean by that research? Definitely, all of you have certain idea about the research. May I know anyone from the highlight some what exactly research means? What boy? Or you would not want to share your idea with me particularly and not going to enrich me? ଏଥିରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟା କାଣା ଉଣା ଅଧିକେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଓକେ ହଁ ଦ୍ୟାଟ Research ଇଜ is one careful, patent, and systematic study in some field of knowledge undertaken to generalize facts in simple words. Research can be defined as the in-depth study of something, search of some new information. okay you have candidly said and expressed in a very lucidly in a brief way what research is and nobody is going to deny what you have said when you said that it is systematic way of studies. The moment you emphasize the systematic way of studies of a particular knowledge or the deeper things, the moment you say that systematic, then you definitely need and some instrument. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ କି ଏଟା ଗୋଟେ systematic studies, deeper learnings.
तो से डीप लर्निंग से सिस्टम टा के हमें जितले जानमा basically those entire things is called as a method or methodology, whatever nomenclature you may add to it. Okay, so that that research, the what it means, what happened? Just I said beginning, every man or woman is engaged in research directly or indirectly. Since the bar, it started for the struggle of the experience. And during the struggle of their own existence, okay, they develop certain phenomena for themselves. Like, and the nature also bested us, okay, to program those things. And nature has given a develop an advanced brain to human being through which they come to survive in the nature over other living organism. Okay, and this researching is a continuous process. And as you know, in very often the teacher said to all of us that you are sitting in the classroom physically, but mentally you are somewhere else. You must aware about it. हमको जितले टीचर माने पढुले बेले काय कहउतले तू अन्य मनस्क होउछ बोली वाट सुनिथिबो केतेबेले भी तुमे माने जेन अन्य मनस्कर कथा कहउछ, it means our thinking, you are thinking something else. The moment you think, okay, you start doing research, whatever may be the matter, subject matter, nothing to do about it. But the moment you start thinking, okay, from that thinking, that something will instigate you to do again thinking. If that thinking or the instigating thing again motivate you to realize those things into a action, and after that action is to be really executed, you need a lot of instrument or lot of supporting instrument to carry forward that things. Okay, let me give you an idea right now. Right now we're living in a very dynamic world, which is very much influenced by the IT and the technology. Okay, and right now the greatest problem for us is that how to choose a handset. If you procure one handset or purchase one handset today, okay, the next day it become an obsolete and you will be upset. No. I have committed a mistake. If I have not purchased these things, I and wait for one day or something else, I should purchase that mobile is na. এটা ହଉଛି କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଆମର ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେଟର ଆମେ କେତେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟେ ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟେ ବି କିଣୁଛ you have studied systematically କରିଛ ନା ନାଇଁ କେବେ you definitely possess whatever handset right now you have କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତେ ହିଁ ତମକୁ ତ କେହି ନା ଧରେଇ ଦେ you have thoroughly investigate each and every aspect of the handset by that particular mobile company. What features is available? You make a comparative study on it. With the other brand mobile phone. And after getting certain satisfactory on your part, then you go for it. ई ଜିନିଷରେ କରଛ ନା ଅଲଗା କିଛି ମେଥଡରେ ତମେ କରୁଛ so
So basically, you perform like that way to procure. So the moment you start the comparative and comparative comparing the things, for that comparison of things, what you look, if you search those phones on your online platform mode, maybe your which one, Flipkart, Amazon, or other online shopping platform which is available to near you, you just go to the product, start reviewing the reviews given by the earlier buyer. Okay, and you look about how many stars they have assigned to that particular mobile brand. Okay, what is it suggests? It suggests that they have quantified those things in assigning a number digit, and that number is in 1 star, 2 star, like that. Okay, so right now that quantifying those things, each when you talked about pure research, okay, then generally right now we are using different statistical tool and technology. Statistical tool, another software which is available to us. Just I have as given a small example how in our daily life we are performing. Or let's say other example. Taking another example, let's say you want to celebrate the birthday of your friend, and you decide that in which motel or the restaurant we have to take our lunch or something else. Then who what do you generally do? Those who person have certain acquaintance, previous experience, they don't know, no, no. The ambience of that X or Y or Z restaurant is not good. We should prefer to Z over like that. So what here that experiencing people convey, and those who are the not experienced those things, they just experience one and agree with that. No, we should follow the footstep what somebody has experienced. So in that way, what happened? There is not an exhaustive list of methodology. If I say in a authoritatively and a right way, so there is not an authoritative way how you can perform the research. So if it is like that, what happened? It creates a very ambiguity. So what happened? Different scholar and the philosopher, they have suggested certain parameter and guidelines and certain yardstick on which is research is to be conducted so that you can reach the desired goal without any hurdles. Otherwise, what happens? It is just like a voyaging in a sea without any compass. Okay, did you get it? What I'm saying? बुझी हो कि नहीं? Hello, all of you are getting what it's saying or anything problem? Hello. Sir, give some idea in Odia language because I have more knowledge in English, so I cannot understand your language very clearly.
Okay, thank you, thank you. This should be conveyed to me from the very beginning. Okay, that's why it should Okay, not be sir. a monologue. Okay, so You use whatever Odia you language more. discomfort, okay, if you face any inconvenience, then you can immediately either you can send it in the chat box that such is inconvenience, or you can say immediately. Okay, thank you. Let me begin and use our mother tongue for this one. Okay, but I'll be trying to use as more as possible the Odia. Okay, but don't mind if I say not properly say the Odia, because I am also not that much of competent to use the research methodology terminology in Odia. So okay, तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାणे କହୁଛୁ research methodology ରେ କହୁଛେ basically ଜିନିଷଟା ଏଇଟା जस्ट ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ନେରେଟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଦଉଥିଲି ଆମେ କ୍ଲାସ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ ଟିଚର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ କି ତୁମେ କ୍ଲାସ ରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକିରି କାହିଁକି ବସିଛ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକିରି ବସିଛୁ ତ ଟିଚର କହୁଛନ୍ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ ଟିଚରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ସେ ଯେନ୍ ବିଷୟ ବସ୍ତୁଟା କ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ ସେ ତାକୁ ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଦେଇକିରି ଶୁଣବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି ଆମେ ଆମର ସଚେତନ କିମ୍ବା ଅବଚେତନ ମନରେ ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେନ୍ ଭାବୁଛୁ କେତେବେଳେ କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ତାକେ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ତାକେ ଆମେ ତାକେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିଣତ କରବାର ଲାଗି ଆମେ କାଣା କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କେତେଟା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକେ के करबार लागि बोली हम केते आनुषंगिक जिनिस गुडा को हमें काने करछु एकजुट करूछु वी आर असेंबलिंग तापरे हमें ताके कार्यकारी ऊपर नउछु तो हमें जेन जेन भावलारू नेकरी जेन एक्शन भितरे जेन जिनिसटा रहला हमें जेन जेन स्टेप बाय स्टेप गला सेटा के जदी हमें कहमा सेटा होउछ हमर रिसर्च मेथोडोलॉजी बुझियला जदी भी हमें गोटे लेमेन आकार जदि भी कहमा बोले हमर एंटायर एप्टीट्यूड किंबा जहां भी डिजाइन अच्छे हमें जेन भाबला भाबी करी ताके जेतेबेला हमें कैच अप करला रे परिणत करला से भितरे रे एंटायर स्टोरी के जदि भी हमें कहमा गोटे गोटे सिंगल वे रे किंबा गोटे शब्द रे जदि हम प्रकाश करमा बोले हमें केन केन स्टेप नेला हमें केन मेथड रो करनेला केन डिजाइन करला जे हमें आसेला ठीक अच्छे जेनते धरो तुमको जीवार अच्छे संबलपुर तुमको जीवार छे लेट्स से दिल्ली जीवार अच्छे तो तुम मन काण अच्छे जई पारबो तुम्हें वर्कआउट करलो ट्रेंड्स काण अच्छे खोजलो मींस तुमर पाखे जितेले प्रॉब्लम टे हला पहला तो तुम्हें आसला कि जिमुई तपरे अवेलेबल मोड खोजुछो ना मु रोडवे रे जीबी ना एयरवेज रे जीबी ना रेलवे रे जीबी रेलवे रे जेतेबेले तुमे चूज करूछो तुमे फर्दर देखुछो मी केन ट्रेन रे जीबी आउट स्पेसिफिक तो सेई एंटायर जिनिसोटा जेंटा कहलो सेटा के आमे काने कहूछु आमे रिसर्च तो एंटायर थीम है जेंते धरो एटे जेन एग्जांपल टे दला कि तुमको दिल्ली जीवार अछि से जगह रे सेमिनार हो से कॉन्फ्रेंस के जीवार अछि तो तुमको काने करलो तुमे टिकट पचरालो काके पचरालछो तुमर सांग जने जे दिल्ली से पचरालो तुम्हें जेन इनफॉरमेशन टा कलेक्ट करलो से तुम सांगर एक्सपीरियंस नै कि आनलो तुम निजे एक्सपीरियंस नै करी ले तुम गुटे इनडायरेक्ट सोर्स रे इनफॉरमेशन आनलो किंबा तुमे काना करलो सेटा के ना नै करी तुमे डायरेक्टली काना करलो जेगरी रेलवे टिकट काउंटर बूथ पाखरे पहुंची गलो से जगह एसेस करलो इनफॉरमेशन तुमे डायरेक्टली इनफॉरमेशन आनलो सपोज ई दुइटा के ना करी कि आइ डिजिटलाइज हेलानो तुमे ताके एसेस करलो
किंबा जितने टा ना करी तुम्हें काना कलो तुम लगी तुम गार्डियन किंबा पेरेंट्स एंगेज कर देले बेले तुम्हें जन जीवार के जन अल्टीमेटली जन थिला तो तुम लगी जन असिस्टेंस गुड़ा को आसला जेन से भी फॉलो मेथड हो से एंटायर जिनिस को आमे काने कहूछु मेथोडोलॉजी किंबा रिसर्च डिजाइन अन्य नोमेनक्लेचर गुड़ा को आमे दउछु ठीक अछि इटा बुझी हला तो एबे हेलो ठीक कि किछि इतरे डाउट अछि No, sir. ओके बेले जेते बेले आउ गुटे जिनिस आमे देखुछु आमे केते बेले हम रिसर्च ता भलेबा सेते बेले हम रिसर्च ता कान रहबा गुटे साइंटिफिक रिसर्च हवा धर जंते प्रत्येक लोक रिसर्च करसन एंते कोनोसी लोक ना न जे कि रिसर्च बिना करि रही पासी गुटे तार परफेक्ट एग्जांपल जति भी आमे नेमा बोले जणे गुटे चासी के जेतला चाष करूछे बोले से एग्जैक्टली से भी रिसर्च करसी केन टाइम रे धान बुले काण हेसी काण नहीं से गुटे पूरा चार्ट हुए तो से काण करसी ताके साइंटिफिकली स्टडी करी रेकॉर्डेड ना करे आमे माने जेंते एकेडमिक रे आमे करूछो रेकॉर्डिंग से माने ना करन तकर पाके ह्यूज एक्सपीरियंस दिसी हला आ से एक्सपीरियंस बेसिक्स रे से माने कहसन आ केते जणा काण कहसन लोकंकर कहा कथा को नेगिरी कहसन नहीं ये एंते कोतला जे इटा हेइसे तो जेते बेले जनकर पर्सनल एक्सपीरियंस रे अच्छे विगत 8-10 वर्ष काम धरी करी तार एक्सपीरियंस बढ़तौछे सेटा के जेनटा भी जेन जिनिस रे से उपलब्धि करछे ताके हमें गुटे साइंटिफिक रिसर्च बोले कहि पारमा किंबा जेन रिसर्चर गुटे मेथोडोलॉजी फॉलो करी आसीछे और साइंटिफिक वे रे डाटा नै किना दउछे ताके हमें साइंटिफिक रिसर्च बोले कहि पारमा जेनटा कि फैक्ट्स फिगर के वेरीफाई करी कहबा से कहउछन बोले करी हेते कहउछन बोले करी ना कहा जाए ठीक अछि जेंते आमे धरा जाऊ जेंते लोकन को कथा अच्छे कि नहीं एक्स और एबे कि जेंते कोरोना टाइम रे हेतिला बोले लोक काण गले जे मद पिले ताके कोरोना ना होए तुमे सुनी देबो अभी ठीक अछि तो से जिनिसटा के केनते करी पाइला जने सेटा होई तो होई भी पारे ना भी पारे किंतु लोक जेन कहले सेटा होचे अनसाइंटिफिक रिसर्च रो गुटे उपलब्ध स्टेटमेंट गुटे का माने कहउछन कि मद पिले लोकन को कोरोना एते जल्दी ना आए कहिकरी धर सहीटा के जदि भी गुटे मेडिकल रिसर्चर किंबा डॉक्टर किंबा कोनोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जदि भी मैथ 100टा कि 50टा सैंपलिंग नहीं थिता मद पिला लोकन को आउन मद ना पिला लोकन को आ ताको आनी करी टेस्टिंग कर दिता तापरे कोई दिता कि नहीं इटा आसला परे ताको ना आवर कहबो पहले से जगह रे काना होतिता हमर इटा गुटे ही जिता सेटा साइंटिफिक रिसर्च बडी हेतिता बुझियला आज्ञा तो साइंटिफिक स्टडी करा ले काने से साइंटिफिक स्टडी which ultimately give you more reduce your error तुमर भूल हेबार संभावना गुड़ा को काण करसी से कमे देसी ठीक अछि जेते बेला हमें साइंटिफिक रिसर्च को काम से हमर भूल हेबार संभावना के से काण करबा से कमे दबा ठीक अछि तो आमर रिसर्च काण होतबार कथा सब बेले
साइंटिफिक होतबार कथा ठीक अछि साइंटिफिक करबा लागि हेले काण दरकार हमको गुटे रिसर्च टा को हमको केतेटा गुटे जेंटा एस्टैब्लिश जेन प्रिंसिपल गुडा को अछि से प्रिंसिपल रु हमको काण करबा के पड़बा फॉलो करबा के पड़बा ओके तो रिसर्च के भी काण करा है छे डिफरेंट एप्लीकेशन बेस हो रे काण होउछे एप्लीकेशन बेस रे ताके डिफरेंट वे रे क्लासिफाई करा है छे जेंते प्योर रिसर्च आ उटेला फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च जेंटा আছে प्योर रिसर्च रे काण होउछे प्योर रिसर्च इज concerned with collection of data that aim to formulate, expand, evaluation of a theory. Pure research रे काण ऐसी जेतेला हम करूछु से जगह रे डाटा निया हेबा ए फॉर्मूला तयारी करा है किंबा एक्जिस्टिंग गुटे नॉलेज रो ताके काण ऐसी ताके कोनसी गुटे सिद्धांत हो थ्योरी डेवलप करा है जेते एबे हमें एग्जांपल टा देना जेते कि जेन माने काण करछन मद पिसन ताकू कोरोना ना हुए तार अर्थ है कि जो माने मद पिसन ताकर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाइए तो सेटा जेन रहला ना तापरे हमें काना कहउछु एप्लाइड रिसर्च जेन रिसर्च ता काना होउछे गोटे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के फोकस करी तार एप्लीकेशन ओरिएंटेड रे हमें करमा जेंते एग्जांपल ता तुमको प्रथम रे दिया आइतला कि मोबाइल फोन किनबाटा तुम एप्लाइड संगे संग करछो कि नहीं मते कंपेयर करलो तुमे नेगरी आनी आलो तापरे रहउचे तुमर एक्शन बेस्ड रिसर्च रे काना होउचे एम्पिरिकली फील्ड स्टडी करी डाटा आनबाटा फोकस करबाटा जेंते तुमे सेंसस देखिथिबो जेन जनगणना हला परे जेंते समाने डोर टू डोर नेगरी डाटा नेगरी कंपाइलिंग करछन सेटा तार गुटे एग्जांपल है तापरे इटा जति बिना हमें एप्लीकेशन बेस रे फर्दर हम रिसर्च काण करि पारमा नेचर बेस रे भी क्लासिफाई करि पारमा जेंते कि उटेला डेस्क्रिप्टिव रिसर्च अकॉर्डिंग टू द नेचर बेस उटेला एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डेस्क्रिप्टिव रिसर्च से काण करा होउचे to describe certain things like descriptive research aim is to accurately portray the characteristic of a particular individual situation or simple like छोटिया आइडिया टाके काने करा है डेस्क्रिप्टिव आइडिया रे ताकि इलाबोरेटिव करकरी करा है सेटा गुटे व्यक्ति विशेष रही पारे गुटे अनुष्ठान विषय रही पारे किबा गुटे ग्रुप विषय रे भी पारे इटा it describes the social situation, social event, social system, any social structure. Okay. तापरे explanatory research रे काना करा होचे in this research particularly the pattern is to explain or find out the main cause and reason for some social phenomena when explain the things okay why these things occur in a explanatory research what happen a certain incident occur let's say certain things need to be elaborated or investigated why it's going to happen or not happen whatever may be the means adventurous way re bola kana haba experiment karwata okay
इटा गला नेचर बेस रे जेन तीनटा क्लासिफिकेशन एक्सप्लोरेटरी जेनटा कहले कि तामे काण करमा में तर आके काण हेबा ना जानी बट वी आर इन ए एडवेंचरस वे वी आर गोइंग ऑन देन आ गुटे वे रे हमें रिसर्च के डिवाइड करा होउची जेनटा हला कि मोड ऑफ रिसर्च रे केन मोड रे करा जाउची गुटे हला मोड ऑफ रिसर्च बेले जेन नॉलेज सिक्योरिंग ता के ना करे करा जाउची फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन रे करा होउची ना सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन रे करा होउची फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हला जेन इंफॉर्मेशन दा कि रिसर्चर निजे कलेक्ट करवा आ रिसर्च करवा सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हला एनी अदर फॉर्म रे जेंटा करवा ओके तो सेतिरे काना होची गुटे डॉक्ट्रिनल रिसर्च आ गुटे हला नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च और द एम्पिरिकल रिसर्च डॉक्ट्रिनल दा जेंटा के एबे कहले कि आमर एक्जिस्टिंग लिटरेचर थिबा किबा एक्जिस्टिंग जे भी काम करा हितिबा the experience of the other are huge there the theorems all lots of things how doctrinal research काने होचे start with a doctrine and end with a doctrine okay गुटे doctrine रू start हेबा doctrinal research पहले गुटे सिद्धांत रू start हेबा आउ से गुटे सिद्धांत रे ही से सरी जीवा तापरे हमर होचे empirical research किबा non doctrinal research एटा एम्पिरिकल रिसर्च बोले काने को अछि जेटा कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है पारे डाटा तापरे ताके एनालिसिस करा हेबा बाय एनालिसिस बाय एडॉप्टिंग एक्सेप्टेड मेथड बोले काने अछि जेते गुडा टूल्स टेक्निक अछि जेन आप आरंभ रु जेन मी कोतली कि आमे जेन सिस्टमैटिक जिमा जेन जेन मेथड आगे अप्रूव्ड मेथड है सेटा के आमे जदि कि टेस्टेड करमा एबे तो बहुत स्टैटिस्टिकल टूल आसी साला ना इक्विपमेंट आसी साला ना से टूल टेक्निक्स नेगिरी करमा आमे जेन फाइंड आउट ता पायामा से जिनिसटा रहउचे हमर हला एम्पिरिकल आ एम्पिरिकल रिसर्च काने होउची इट्स डिफाइन रिसर्च and create the relationship between different variables with the other behavioral variable okay तापरे काने होचे पैटर्न बेसिस रे फर्दर आमे काने करूछु जेंटा कि पैटर्न बेसिस जेन क्वांटिफाइंग रो कथा जस्ट आगर कहतली कि रेटिंग स्टार केनते के दोउछन से बेसिस रे भी काने करा होचे रिसर्च के दु भाग रे विभक्त करूछन गुटेला क्वालिटेटिव रिसर्च आ गुटेला क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटी रिसर्च का काने करा होचे जेन जगह रे तार कोन conceptually जेन जगह रे काना करा होचे हमर डाटा गुडा को निया होचे ओके क्वालिटेटिव ता आउ क्वांटिटेटिव पे काना करा होचे जेते बेला हमें मैथमेटिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स फिगर इन ए सम न्यूमेरिकल वैल्यू जेते तुमे लाइक को लेवल केते लाइक करू छ 1 2 3 जदि हमें ताके कन्वर्ट करमा तो सही जिनिसटा ओके ओके इतरे किछि प्रॉब्लम अछि हेलो No. No. ओके 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 तो एते बेले हमें जेति कहला जेन रिसर्च करमा कहला जेन वेरिएबल रो कथा कहला
किंबा जेतेबेले से थिंकिंग रो कथा बेले जेतेबेले कहउतली ई सबु जिनिस जेतेबेले हम कथा होउछु बेटा तो ले मेने हिसाब रे कहमा किंतु जेतेबेले हम रिसर्चर हिसाब रे जीमा सेटा के दर्शावा लागि हमको काना सर करबा सर टिके हेलो हेलो हां 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 हाँ हाँ प्रधान सर हां हां ए पिला माने सब पूर्व ओडिसा रे अछंती तो अच्छा बोधे ओके संबलपुरी ओके लैंग्वेज बुझिबारे टी असुविधा होतबो असुविधा होउची सस्मिता ନାଇଁ ସାର୍ ଚଳିବ। बुझी होउची तो सनम कार किछि बुझिबारे असुविधा होउची की नहीं सर बुझुची अवस्था नहीं। अच्छा तल ठीक अछि हां okay again you see that in our class what sorts of problem you are facing. So in order to solve that problem what I have to be asked by applying the census method each and every one in which language all of you are comfortable. But let's say it's all lies on my part. अच्छा मु जानिनी अच्छा कि येटा आ मते ठीक कि ओडिया भी भल कि कहि आसे ना संबलपुरी भी आसे व्हाटएवर यू कैन से आई एम नॉट दैट मच ऑफ व्हाट यू कैन से टू कम्युनिकेट those things because whatever we have studied since school undergraduate graduate all are the English and those things तो जेते बेले कम्युनिकेट करला बेले ना टिके असुविधा होउछे ठीक अछि सो प्लीज कोऑपरेट एंड बियर विथ मी तो जेते बेले हमें कहूछु सही जिनिस गुडा को कि जो थॉट प्रोसेस हैला किंबा जो वेरिएबल्स हैला ताकू स्टेटमेंट वाइज कन्वर्ट करी कि हमें सोशल साइंस सिस्टम रे ताकू हमें प्रूव करबा ପାଇଁ चेष्टा करू किंबा डिस्प्रूव करबा ପାଇଁ चेष्टा करू धरो एथिरे मु गुड एग्जांपल देली स्टेटमेंट एटा हला झियो मान शिक्षित झियो हेले शिक्षित झियो मानक ପାଇଁ ଯୌତିକ ନିର୍ଯାତନା ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ମାନେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲି ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିଲା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ତ ଏବେ ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିସଟା ନେଲି ମୁଁ କଥାଟା କହିଲି ଏଟା ତ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ନେଇକି କହିଦେଲି ଚିନ୍ତାଟା ଆସିଲା এটা টেন্টেটিভ টা याको हमें रिसर्च रे कोन को यू कॉल्ड वी से इवन इज एन हाइपोथेसिस तो एबे एई जगह रे मोर पाखरे दुटा वेरिएबल रहला उठेला शिक्षित आ गुटे रहला जिन যৌতুক निर्यातना अछि तो एई जगह रे गुटे मो पाखरे डिपेंडेंट वेरिएबल अछि गुटे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अछि तो तो एई जिनिस को मते कोन करिवार अछि एबे मते प्रूव करिवार अछि एई जो मु H1 जिन हाइपोथेसिस नेली कि शिक्षित झियो माने যৌতুক निर्यातनार शिकार होंती नाही किंबा शिक्षित झियो माने যৌতুক निर्यातनार अधिक शिकार होंती धरो मु प्रथम हाइपोथेसिस जेटा कहली कि जो ए टेंटेटिव जेटा कहली सेटा को आमे कोन कहू ताको हाइपोथेसिस कहू सेटा गुटे assumption on the basis of probability tentative statement expression of the nature जो जगह रे कि रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रहउतो ठीक अछि तो एई एबे जो एग्जांपल ता देली कि शिक्षित झियो माने যৌতুক निर्यातनार शिकार होंती नाही
କୋଟ୍ ଅନकोट तो एबे मते कोन करिवार अछि एई जो स्टेटमेंट जाकू के आमे हाइपोथेसिस कहउछे मु एजम्पशन रे नेली केमती नेली मु देखली केमती मु एटा को एज्यूम करली कि एटा होई थई पारे मु देखली कि नहीं जेतेले झियो किंबा समाज शिक्षित होउछि तो तो से कमे दे पारे काहे से माने निजे ही रोजगार क्षम हेबे बोले से जगह नेबे नी कहि तो एयाकू वैज्ञानिक पद्धति रे साइंटिफिक वे रे मते कोन करिवार अछि ताकू प्रूव करिवार अछि तो मु केमती करिवि मते ता पई दरकार डाटा दरकार डाटा की हेबो डाटा ये माने हेबे जो माने झियो अछंती काहे कि मु शिक्षित झियो कथा कहिछि तो एई जगह रे मते झियो मान को नबर अछि झियो मान को नेले मु केउ झियो मान को नेबी जेउ झियो माने विवाहित होइछंती मो किंबा किंबा से झियो नगे मु शिक्षित महिला माने मु नेली से माने कोनते नै कि शिक्षित रो अर्थ मु नउछि ए जगह रे कि से माने पाठ साठ पढिथिबि किंबा ग्रेजुएट कोन होइथिबे ताकू मु करिवि तो जेउ महिला माने अछंती विवाहित महिला माने मु तांको नेबी तांको एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेबी आ से अनुसार तांको मु कोन करिवि क्वेश्चनर मु तांको पई किंबा इंटरव्यू शेड्यूल किंबा आ कोन मु पचारि कि आनिबि आ सेति पई मु कोन करिवि मु सैंपलिंग ताकू नेबी रैंडम सैंपलिंग हो तार बहुत गुडा अछि तार मेथड्स से जो मेथोडोलॉजी कोछि रा हमें परे पड़ेबा किंतु मु हाइपोथेसिस केमति करा मु सेति पई कोछि एटा तो तापर कोन करिवि मु से रिलेटेड लोगन को आनी कि मु ताकू प्रूफ किंबा डिस्प्रूफ करबा पई चेष्टा करिवि धरो मु 50 टा महिला मान को आनिली से 50 टा भीतर धरंतु मते 30 जन कहिले जो माने कि शिक्षित महिला माने जो माने अछंती मु शिक्षित का को नेली जो माने ग्रेजुएट पर्यंत पाठ पढिसंती किंबा 12 जाय पाठ पढिसंती मु तांकु कैटेगराइज करदेली ठीक अछि जो माने ग्रेजुएट करिसंती से माने बहुत अल्प शिकार होंती ताठु अधिका शिकार होंती जो माने धरंतु +2 पढिसंती ताहारु अधिका शिकार होंती जोतक ने जतन जो माने योसंती मोर रिजल्ट आसिला तो मोते ये देखैला जो डाटा आनिली कि जो मु एजम्पशन नैथिली सेटा मोर प्रूफ हैला कि शिक्षित हेले कोन होउची ज्योतिक निर्यातना उते जोथ विवाह परिवार से कमी कमी जाउची से जगह रे मु केउ मेथड को अप्लाई कली मु एम्पिरिकल मेथड को नेली जोथरे कि मु सेंसस मेथड यूज करली सॉरी रैंडम सैंपलिंग मु नेली मु धरो गोटे टाउनशिप रे कली किंबा गोटे गाँ रे कली मु से गाँ को नै कि कली से गाँ रो समस्त को तो नै पारिबिनी तो मु कोन करबी ताकू सैंपल डिजाइन करबी सैंपल डिजाइन केमती करबी मु डिजाइन करबी जो मानकर विवाह 1 रु 5 वर्ष कि 7 वर्ष अछि से मान को ही मु नेबी मोर टारगेट रहिबे रेस्पोंडेंट से हिसाब रे आनी कि आनिबी एटा मु कहिबी तो जेते बेले भी जो टेंटेटिव कथाटा को मु एबे जे कहितली कि शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातनार शिकार होंती नाही ए जो थिला कोट ऑन कोट एजेंडा थी एटा हला मोर हाइपोथेसिस ताको मते कोन करिली मु प्रूव करिली एटा केते दूर सत्यता अछि ना मु मो मन गडा जो मो मन को आसिला मु सही आकारे कहि देली सुनी कि आउ काटू ठीक अछि तो ताको मु साइंटिफिक वे रे स्टडी कली कि मु देली नहीं मु एई जगह रु डाटा आनिथिली मु 100 लोकन को आनिथिली 100 जन को भितरे 30 जन जो माने कि स्नातक किंबा तार ऊर्ध्व पढ़िथिले से माने कहउछंती कि से माने ज्योतिक निर्यातनार आभास पांति नाही जो माने +2 जाय पाठ पढछंती से माने को भितरु 20 जन थिले जो माने कि कहउछंती कि से माने को भितरु 2 कि 4 जन आभास पाउछंती ज्योतिक निर्यातनार आउ जे माने
बॉटम रो लेले जे पाठ साठ पढ़ी नांदी तांको अधिकार दिया होची परंतु आ गुटे गाँ रे जेतेबेले मु नै कि सेटा को कली कि कि तार उल्टा मते रिजल्ट गला शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातन हो मु सेटा ए गाँ रे कली मोर रिजल्ट आसिला कि मोर हाइपोथेसिस जाने कि सेटा प्रूव हे गेला कहि कि धर गाँ बी रे जेतेबेले मु सेटा करूची से जगह तार ऑपोजिट आसला जो माने बिल्कुल पाठ साठ पढ़ी नांदी से माने कहले नहीं आमे ज्योतिक निर्यातन शिकार होउनी जे जेते अधिका पढ़िचंती पाठ शिक्षित होइकी अछंती से माने कहले नहीं आमे ज्योतिक निर्यातन शिकार होउछु एथिरो मु कोन पाइली तार पूरा ऑपोजिट पाइली तो जिनिस ए मु कहबा कथा हला ए जगह रे दुई जनकर रिजल्ट ठीक एई हाइपोथेसिस वाला भी ठीक कहउची एई जगह रे कोन कहउची जेहेतु जने शिक्षित हला तार अधिकार प्रति सचेतन हला बोलिकरी से राइज करूची बेले आमे जानछु कि तांको जगह रे होउची तो सेति पे जेतेले आमे सोशल रिसर्च जेतेले when you are advocating then we have to be focused on our respondent anything that's why I'm from the very beginning that आपण मानकर रिसर्च कंडक्ट गुटे जगह रे करी करी आइथिबे सेही जगह रे आउटपुट अलगा हेबो मोरटा अलगा हे पारे ओके जेतेला तो right now we're in an election year when you switch on any news channel or your cell phone smartphone you able to find out different अमका पार्टी एते सीट जितिबो से पार्टी एते जितिबो how they are doing it केते बेले की केते देखौची समस्तंकरटा केते बेले से समान न थाए किंबा केतेटा पाखा पाखी थाए सेटा एई जो सैम्पलिंग्स कला बेले सेटा आसे तो जे जेते बढ़िया सैम्पलिंग जार डिजाइन करितबो एरर ता कोन हो हेबो तांकर कमी कमी जीवो तो एबे जे कथाटा मु एबे कहतली जे हाइपोथेसिस कथा कहतली hypothesis is an tentative statement ओके एबे जोटा हमें कहला कि टेंटेटिव हमें गोटे कथाटा कहला कि शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातन शिकार होती नहीं एटा टेंटेटिव थिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिसर्च कोन कली ना मु ताकू प्रूव कली आ सिद्धांत रे उपनीत हेले कि नहीं सतरे शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातन शिकार होती नहीं किंबा तार उल्टाटा जोटा मु कहतली नहीं शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातन अधिक शिकार होचंती काहे कि जेहेतु से माने जानिसंती तांकर अधिकार और सचेतन विषय सचेतन अछंती से माने कहउछंती आय माने जानि नाहंती तो कहउ नाहंती कि सेति पई आगर आसुनी एटा भी हे पारे ठीक अछि तो आमे जो एबे जो मु टेंटेटिव स्टेटमेंट ता कहली जा को हाइपोथेसिस कहि लागे हम हाइपोथेसिस केमती फॉर्मुलेट करि पारिबा the stages in the formulation of a hypothesis and how you are going to formulate hypothesis first जोटा हमें कहउछु कि observe of a phenomena कोनोसी जिनिसटे होउची ताको हमें ऑब्जर्व करि कि कहबा धर जेंती गुटे लोकंकर अछि नहीं जे मोबाइल फोन धरिला गाड़ी जनला से स्मार्ट बोली हमें कहउछे गुटे ट्रेंड चली ना कि जे जब भी इंग्लिश पे कहि पाला भल दी पद नहीं से भल पाठ पढ़ी छी इट नॉट नेसेसरी कि से पढ़ी थिबो किबा ता पाखरे से इंटेलेक्ट भी थिबो बट आमे फिनोमेना रे कहउछे तो सेटा हला ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमेना सेकंड आइडेंटिफाइंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल जब भी दुटा वेरिएबल अछि तार कॉज इफेक्ट रिलेशन स्टडी करी कि एबे जोटा मु एग्जांपल दउतली तापरे लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आमे जो सेकंड ता देली कि नहीं महिला माने जेतु ओ शिक्षित महिला माने ज्योतिक निर्यातन शिकार होछन सेटा मु लॉजिकली डिडक्ट करके आसी घर तार सहित संपर्क कोन अछि कहि कि ओके
देन आ गुटे हला कि एम्पिरिकली आमे डाटा आनी के कोइ पारिबो नहीं नहीं एटा होउची एमते एके तापर ग्रेटर वे रे स्टडी करी ताकू करिबाटा ओके तो हाइपोथेसिस बुझी हला ना नहीं do you able to get what is an hypothesis Sir, कि किछि एतरे डाउट अछि हेलो कि एतरे किछि or do you feel any difficulties in this particular hypothesis okay so कहला सर एठी रहि जेबा के टिके एबे गोटे मीटिंग ते अछि त एबे हेलो हाँ सर हेलो कार किछि डाउट अछि बेले से माने पचारि देबे ठीक टिके अछि कोन तो कार किछि डाउट अछि बेले पचारि देंतु काହାର କିଛି डाउट ଅଛି କି ପିଲାମାନେ sir, give some idea any positive and positive. um, pardon I'm unable to your voice is cracking so can you repeat again Sir, I want to know what is positivism and post-positivism. positivism and post positivism okay Yes, sir. you know positive is positive what signify the positive means it is let's say which exists as it is we generally call it is a positive approach let's say let me give an example here the college or university where you study okay they follow certain principle okay those principle isn't positivity but you consider that those principle is not good enough it means what ought to be means there is some state of phenomena which is constantly going on by certain principle which is already established by the certain practices on or certain principle or certain convention okay but those are the positive in nature but those other what you have said tar agute kono tila post positivism what happens means it is in case okay or the you called it we called it also the post modernism so in that case what happened nothing you are going to follow means all sort of things which is exist we demolish it reconstruct it or deconstructively you build up certain things okay I think ବୁଝିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ Sir, give some more idea in Odia language.
in that context, I think I'm little bit helpless. कि ये positivism को I'm unable to translate into those things into Odia. But I definitely assure you, whenever I take any next class, particularly I will be talk those things in Odia about the positivism, post-positivism, postmodernism, and the modernism, how it's going on. But for the time being, I'm also a little bit helpless. Okay, sir. The ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ହଠାତ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂରାଜୀ କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହବ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ସବୁବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମକୁ ଫଲୋ କରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ମିଷ୍ଟର ଡୁଲାମଣି ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥୋଡୋଲୋଜି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯେ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ସମୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ Thank you, sir. Thank you very much, sir. I'm privileged to get a platform so that I can able to share some things which is roasted in myself and create some problem. So I'm privileged to have shared so many things with all of you, and you have spared your valuable time with me. Thank you again. রাত্রি 8:45